जूनागढ़ से हरिद्वार तक की विशेष ट्रेन सेवा को शुरू करवाया गया है। तब गिरनार के संतों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस ट्रेन का जूनागढ़ के रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। जूनागढ़ से हरिद्वार तक की एक विशेष ट्रेन सेवा की शुरुआत करवाई गई है। तब इस पावन मौके के दौरान जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र में विराजमान साधु संत और ऋषि कुमार मौजूद रहे थे। ट्रेन के प्रस्थान से पहले गिरनार तलेटी के साधु संतों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन अर्चन कर ट्रेन का स्वागत किया गया था। शंखनाद, मंत्र ध्वनि और भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया था। तब आपको बता दें कि ऋषि कुमारों की ओर से वेद मंत्रों के साथ इस ट्रेन के सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी गई थी। ऐसे में इस वक्त जूनागढ़ के जो यात्रालु है वो बेहद ही खुश है। जूनागढ़ पब्लिक ने बहुत फायदा माटे थयो छे कि जूनागढ़ थी हरिद्वार जे यात्रानी ट्रेन शुरू थई छे ए आपणी आम जनता माटे बहुत लाभदायक छे। અને ત્યાંથી જે આપણે હરિદ્વાર જવા માટે જે તકલીફ પડતી હતી આપણે યાત્રાળુ આપણે હવે ઘર આંગણેથી આપણે ટ્રેન મળે છે સીધી જૂનાગઢ ટુ હરિદ્વાર બહુ પબ્લિક માટે બહુ લાભદાયક છે। અમને બી બહુ આનંદ થાય છે કે આ અમને અમારા માટે બી બહુ આનંદ की વાત है। મારું નામ રાજેશભાઈ મોહનભાઈ જાદવ છે। અમે હરિદ્વારથી આવી છીએ, મુસાફર અવારનવાર કરવાની હોય છે, પણ અમદાવાદથી અમારે ટ્રેન બદલવી પડતી, બસો ન મળતી, બહુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો। ક્યારેક રાતે 2 વાગે 2:30 વાગે પહોંચી, રાતના કોઈ સાધન રિક્ષા ઓટો ન મળતા। તો હવે આ જે જુનાગઢથી હરિદ્વાર સુધી જે ટ્રેન ચાલુ થઈ બહુ અમને ખૂબ આનંદ થયો છે। બહુ અમારા માટે બહુ બેનિફિટ છે, બહુ ફાયદો છે। પ્લસ પૈસા તો ઠીક છે પણ જે અમારે પરેશાની થતી હતી હરિદ્વાર જવા માટે એ બધું અમારે દૂર થઈ ગયું છે। અત્યારે અમદાવાદથી અમે 2 દિવસે તો અહીંયા 2 રાત 2 દિવસ એવી રીતના પરેશાન થતા। અમદાવાદથી 1 દિવસ વધારે થતો હતો। આ અમે સીधा शॉर्टकट सीधा हरिद्वार में पहुंची जाते जूनागढ़ से डायरेक्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं